भांडूपमध्ये दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या ठिकाणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी चौथ्या ठरावले चढून दहीहंडी फोडण्याचा मान मिळवला। पारंपरिक पद्धतीने साजरा झालेल्या या उत्सवात सोमय्या यांनी केवळ दहीहंडीच नव्हे तर राजकीय हंडीही फोडली। यावेळी त्यांनी अलीकडच्या काळात गाजलेल्या बांगलादेशी घुसखोर प्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणावर टीका केली। या घोटाळ्याला फोडून काढल्याने त्यांनी जाहीरपणे सांगत यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली। इतकंच नाही तर त्यांनी याच कार्यक्रमातून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली। ठाकरे यांनी राज्याच्या प्रशासनात केलेल्या कारभारावर आणि जनतेशी केलेल्या वागणुकीवर त्यांनी थेट निशाणा साधला। एका बाजूला दहीहंडीचा उत्साह, टाळ्यांचा गजर आणि पारंपरिक गजराचा माहोल होता, तर दुसऱ्या बाजूला राजकीय हंडी फोडण्याचा सूर देखील उमटला। मैं गत 30 वर्ष से 1995 से यही भांडुप में आकर दहीहंडी फोड़ता हूँ। आज भी चौथे स्तर पर जाकर दहीहंडी फोड़ी है और 30 साल से आज हमने प्रतीकात्मक रूप से बांग्लादेशी जो घुसखोर हिंदुस्तान में इतने बड़े प्रमाण में घुस गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की। उन बांग्लादेशी घुसखोर अपात्र लोगों ने 2,24,000 ने महाराष्ट्र में एप्लीकेशन की थी, उसकी भी हंडी भंडाफोड़ मैंने किया है। समझौता किया, हरा फेटा बांध दिया, जनाबे आलेकुम करने लगे। उसी दिन उद्धव ठाकरे के सेना की हंडी फूट गई है। इस बार के स्थानीय स्वराज्य चुनाव में महाराष्ट्र में सब जगह हिंदुत्व का भगवा झेंडा हम लहराएंगे। किरीट सोमय्या यांची भूमिका पाहता भांडूपच्या या दहीहंडी कार्यक्रमात राजकारणाचा रंग अधिक गडद झाल्याचं स्पष्ट झालं। ब्युरो न्यूज, शहर मुंबई।